Hi, this is Bijoy Nambiar and you're watching me on Filmy Mantra. कब सोचा था कि मुझे डायरेक्टर बनना है? बहुत लोगों को ये एक गलतफहमी है कि डायरेक्टर्स का काम सिर्फ कट और एक्शन का होता है। आई नो देयर इज लॉट मोर। एक फिल्म मेकर को आप ये सवाल कभी नहीं पूछ सकते। वो एक्शन और कट के बीच में बहुत कुछ होता है। इन द मिडल ऑफ वन सीन ही जस्ट गॉट अप, नहीं सर कि मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। तो आप नहीं जा सकते, हमारा सीन चल रहा है। एंड आई केप्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू हिम कि हर फ्रेम में आप हो, तो मैं आपको सडनली मैं बेड पे अगर आप नहीं रहोगे तो लगेगा कि सडनली जो बाप का किरदार है वो भूत बन गया, ऐसा हो जाएगा ना। तो बहुत सारे एक्टर्स को एटीट्यूड इशू होता है। विमल इन तोया में आई थिंक बोथ आदर्श एंड शनाया एंड ऑफ कोर्स द सपोर्टिंग कास्ट, सो यू कांट रियली से कि हाँ 5 मिनट से इनको इतना लगता है, 10 मिनट से इतना लगता है। टीवी में ऐसा होता है बट फिल्मों में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे एक्टर्स जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, जिनसे मैं मिलता हूँ, बात करता हूँ, लेकिन कभी कुछ होता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं। दैट्स हाउ that's how obsessed I was with watching movies. So, मॉम के साथ ही डील कर लिया। हाँ, डील कर लिया। पद्मराजन, मणिरत्नम, ऋतिक घटक, सत्यजीत रे, अडुल गोपालकृष्ण। क्राइम थ्रिलर और इमोशनल ड्रामा, व्हाट वुड यू चूज? वन फिल्म ऑफ योर्स दैट डिजर्व मोर लव। Spending the night while the crocodile is right there and this is a song that comes to me. कोंकण बे मरीन जो है होटल का नाम है, वो that is inspired by खून बरी मांग, so it's KBM, so that KBM is from there. स्क्रीन होती है आई थिंक बाजू में मॉनिटर, वहां पे चेक करते हो उसके पीछे का जो पूरा स्ट्रगल है दैट वी डोंट नो एंड वी एक्चुअली वांटेड टू नो दैट। हाय गाइस, दिस इज अरुणा पूर्वे एंड यू वाचिंग मी ऑन फिल्मी मंत्रा। वो कहते हैं ना, एक सक्सेसफुल मूवी के पीछे सिर्फ एक्टर्स की हाथ नहीं होती है, एक डायरेक्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी हाँ, इस वक्त हम बात करेंगे लाइट्स, कैमरा एंड बीटीएस विद डायरेक्टर बिजॉय नाम्बियर ऑन फिल्मी मंत्रा। सबसे पहले तो बिजॉय, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्मी मंत्रा पर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तू या मैं को काफी प्यार मिल रहा है और एक सक्सेसफुल मूवी हो गया है। कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है। फीडबैक वाइज से आई थिंक इतना पॉजिटिव फीडबैक मुझे मेरी कोई फिल्म के लिए नहीं मिला, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। आई एम ग्लैड दैट ऑडियंसेस हैव लाइक्ड इट। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद 2M कास्ट एंड एवरीवन? आई थिंक इट्स अ वेरी क्लीशे आंसर। हर डायरेक्टर वही बोलेगा कि सब एक्टर्स का काम करके बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। मैं भी वही बोलूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। इट वॉज अ यंग कास्ट, यंग क्रू, so and we were, I think we really bonded together over because for a long spell of time हम लोग एक ही जगह पे शूट कर रहे थे, तो एक ऑलमोस्ट एक घर जैसा ही माहौल था, तो इट्स क्वाइट नाइस। रियल क्रोकोडाइल्स के साथ शूट किया था मैंने सुना ऐसे जी। कि तो किस तरह से आपको मतलब रियल क्रोकोडाइल से डर लगता है या नहीं लगता है? यू आर फ्रेंडली विद देम ऑन द सेट? नहीं, ऑफ कोर्स डर लगता है, बट लकीली फॉर मी we worked with some very good wranglers and trainers who assured us कि safety wise they'll take all precautions before we could go there. So हमने काफ़ी सारा safety precautions पहले लिया. We did one test run to make sure that everything is okay, and then we shot it. So it was okay, it was fine. But from short films to big blockbuster films now, कैसा रहा पूरा जर्नी आपका? ऑलमोस्ट 20 साल हो गए मेरे फिल्म इंडस्ट्री में, एंड आई थिंक एज अ फिल्म मेकर इट्स बिन ऑलमोस्ट 15 years. So it's been a very interesting journey. I was fortunate to work with some very good technicians and actors and very good teams over the last 15 years. I've really worked with some very interesting people. So I guess they say that the journey is way more important than the final destination. So for me, every project has been a very interesting journey, and I enjoy that with a lot of enthusiasm, and I really look forward to starting a new one. Every time I finish one, I can't wait to start the next one. कब सोचा था कि मुझे डायरेक्टर बनना है? I think बचपन से एक affinity था towards films and towards wanting to be behind the camera. वो एक फिल्म को लेकर एक obsession हमेशा था। तो बचपन में स्कूल में भी I used to, I think if I watch a good film, next day I used to try and direct a scene from that film with my friends, and my friends were very sweet enough that they would actually act and everything, and I would direct. So ऐसा मैंने स्कूल में काफ़ी किया था, and I had some very good friends who really I guess encouraged me a lot. So thanks to them I'm here today. बहुत लोगों को ये एक गलतफहमी है कि डायरेक्टर्स का काम सिर्फ कट और एक्शन का होता है। आई नो देयर इज लॉट मोर, तो एग्जैक्टली आपसे जानना चाहेंगे वो स्ट्रगल बिहाइंड दैट पर्टिकुलर शूट। A film is a collaborative process.
as a director, of course, a lot of it, as creative as it sounds, but a lot of it is also people management. So you have to really manage your entire crew, your cast, and get them all together to see the vision that you have, and try to get them to match that vision. And so it's a lot of manipulation, I feel, a lot of manipulation and a lot of people management. So वो एक्शन और कट के बीच में बहुत कुछ होता है. एग्जैक्टली वही पहले हमें भी ये होता है, चीज नहीं बीच में पता, इसलिए हम होता है. आपसे जानना चाहते हैं कि वो एक्शन और कट के बीच में क्या प्रोसेस है पूरा. नहीं बहुत कुछ है. मैं आई डोंट थिंक ये इंटरव्यू का टाइम काफ़ी होगा वो सब एक्सप्लेन करने के लिए. बट राइट फ्रॉम द स्क्रिप्टिंग टू द प्रेप, द प्री प्रोडक्शन टू द एक्चुअल शूट, देन द पोस्ट प्रोडक्शन टू गेट द फाइनल कॉपी आउट, फिर पिक्चर बनने के बाद उसकी मार्केटिंग को लेके, फिर उसको रिलीज़ करके थिएट्रिकल देख के, देन उसका डिजिटल वर्जन OTT पे डालने के लिए उसका कट के लिए. तो बहुत कुछ, देयर इज अ लॉट दैट गोज इन ट्राइंग टू रियलाइज द प्रोजेक्ट. सो राइट फ्रॉम द लाइक स्क्रिप्ट को लेके लास्ट फाइनल जो आई थिंक पहले तो DVD बनता था, DVD तक बोलते थे. Correct, हाँ. कि स्क्रिप्ट से लेके DVD तक, बट अभी ना स्क्रिप्ट से लेके फाइनल OTT रिलीज तक there's a lot that happens, and you need a lot of help from a lot of people to kind of help you get there, to be part of that journey. So yeah. एक्टर्स के साथ किस तरह से डील होता है ऑन सेट, बिकॉज आई नो कि बहुत सारे एक्टर्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद योर एक्टर्स व्हिच यू हैव वर्कड विद? Because I was very fortunate that I worked with some very legends of actors, and I worked with some very newcomers also, but I've never had a bad experience with actors that कुछ difficult होगा उनके साथ काम करना, ऐसा तो मुझे कभी हुआ नहीं है. हुआ है लेकिन very very weirdly it has happened with actors who have come for like very small parts. In fact, not established actors. Those actors have troubled me a lot. That is very weird. Oh. But established actors and massive like big stars of who I worked with, they have never troubled me. But there are these, sometimes I encounter this actors who are not very established, who don't have much of experience. I think maybe that's why they don't have the experience. They don't know how it is to kind of really work with a crew like that. Like for instance, I think I was producing a short film once, and there was an actor who had to be in a comatose state. Like he was in a coma. Oh. On a bed. Okay. So throughout, and in front of him, lot of other activity was happening. That other actors doing dialogues and everything. But throughout the scene, he was there in the background. In the middle of one scene, he just got up and he said कि मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ. तो I was like, आप नहीं जा सकते, हमारा scene चल रहा है. मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ. तो so that and I kept trying to explain to him कि हर फ्रेम में आप हो, तो मैं आपको सडनली आपको मैं बेड पे अगर आप नहीं रहोगे तो लगेगा कि सडनली जो बाप का किरदार है वो भूत बन गया, ऐसा हो जाएगा ना. तो मुझे उनको कितनी बार मैं समझा रहा हूँ वो समझ नहीं पा रहे थे. तो ऐसा like I have encountered problems like this with certain actors, but established actors understand कि नहीं, you need to cover, you need to have. So my experience with my actors have always been great. I had a great time even in Toya mein. I think both these both Adarsh and Shanaya, and of course the supporting cast, it was an absolute dream to work with them. They came so prepared, and they came with so much of energy, and they came with so much of inputs of how they can enhance the part, and that really helped the film. So I had a great time working with them. बॉलीवुड डेब्यू की बात किया जाए तो शैतान से आपने डेब्यू किया था. नाउ तोया में आपका लेटेस्ट प्रोजेक्ट है. तो वो कहते हैं ना, एक्टर्स और डायरेक्टर्स के बीच में एक नोक जोक हो जाता है, या फिर एक नोक जोक वाली रिलेशनशिप तो होती है. तो आपका ऐसे कभी हुआ है नोक जोक आपके एक्टर्स के साथ? जब भी हुआ है, it has always been a creative नोक जोक. It'll always be to अगर मैं एक तरीके से कुछ चीज़ देख रहा हूँ और वो कुछ अलग तरीके से देख रहे हैं, तो और हम मिल नहीं पा रहे, we're not able to manage it, then there are a lot of discussions and arguments that happen, but it's all creative, it's all for the better of the film. The actors also thinking that this will be the right way to do the part, to do the scene which will better the film, and I am thinking it differently. So ऐसा नोक जोक होता है, बहुत बार होता है, and I find it very healthy. कि अगर नोक जोक नहीं हुआ तो it's weird, I feel that actors should be invested enough to
feel they own the part to give me that kind of input. So I don't mind that kind of no joke at all. ऐसे कोई एक्टर के साथ you have come across जिसमें बहुत एटीट्यूड इशू है? तो बहुत सारे एक्टर्स के बहुत सारे एक्टर्स को एटीट्यूड इशू होता है, बट ऐसा एंड यू नो व्हाट हैपेंस इज इवन इफ दे हैव द एटीट्यूड, you know, they will not show it to me, they'll show it to my production, they'll show it to others, but मेरे साथ कभी नहीं दिखाएंगे. So luckily for me, so when production comes out then others come and tell me ऐसा क्या, I don't care, because as long as they are doing my work and मेरा काम में मुझे कोई अड़चन नहीं आ रहा तो there's no problem. उनको जितना एटीट्यूड देना है देने दो, बट मेरे काम में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक 5 मिनट्स हो या फिर 10 मिनट्स का कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस हो, कितना टाइम लगता है वो शूट करने के लिए? वो पूरे सीन पे डिपेंड करता है, वो सीन का कॉन्टेक्स्ट क्या है. अभी अगर 5 मिनट का सीन है, लेकिन अगर पूरा 5 मिनट एक शॉट में अगर करना है तो उतना ज़्यादा प्रेप लगेगा, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा. एंड वाइस वर्सा, 5 मिनट का सीन है एंड देयर इज लॉट ऑफ कवरेज एंड देन उसके लिए भी उतना टाइम लगेगा. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड डिपेंड्स ऑन द सीन. सो यू कांट रियली से कि हाँ 5 मिनट से हमको इतना लगता है, 10 मिनट से इतना लगता है. टीवी में ऐसा होता है बट फिल्मों में ऐसा नहीं होता. बट एज अ डायरेक्टर जब आपको प्रोजेक्ट अप्रोच किया जाता है तो क्या कुछ चीज़ है उसमें जो आपको अट्रैक्ट करता है और आप बोलते हो येस आई विल डू दिस? बहुत कम कहानियाँ को मैं येस बोलता हूँ, क्योंकि मैं खुद अपनी कहानियों को पिच करता रहता हूँ, मैं खुद अपनी कहानियाँ बनाना चाहता हूँ. तो अगर कुछ बहुत ही एक्साइटिंग कहानी आता है तो लाइक तो यहाँ मैं वॉज प्रेजेंटेड टू मी. सो व्हेन आई हर्ड द स्टोरी, व्हेन आई हर्ड द आइडिया, मुझे वो काफ़ी आकर्षित किया. मुझे आई रियली थॉट समथिंग वेरी न्यू, एक नया जॉनर है जो हम लोग ज़्यादा करते नहीं यहाँ पे. और देयर वाज अ नाइस इंटरेस्टिंग सबवर्जन ऑफ जॉनर्स. इट स्टार्ट्स ऑफ लाइक अ वेरी मीट क्यूट kind of love story and then becomes a survival thriller. तो मुझे वो सारे एलिमेंट्स बहुत I found very appealing. तो ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता है, ऐसा बहुत कम पढ़ने को मिलता है. तो जब ऐसा कुछ आता है तो डेफिनेटली आई लुक एट इट. एज अ फिल्म मेकर फिर कौन सी जॉनर आपके ज़्यादा पसंद है और उस पर स्टोरीज क्रिएट करना पसंद है आपको? ड्रामा इज़ माई फेवरेट जॉनर. ड्रामा इज़ माई मोस्ट फेवरेट जॉनर टू वॉच, टू राइट. So it's a genre that I can keep. It's like though I don't get to do much, most of my films are thrillers or action, but even there I try and ground it in a lot of drama, because drama is my favorite. That's my I would say my comfort zone. स्टोरी लिखने के लिए भी इन डेप्थ वो इमोशन को भी फील करना पड़ता है, तो किस तरह से आप वो इमोशन पूरा फील करके फिर एक स्टोरी बनाते हो, फिर आउटकम आता है? So जब आप कहानी लिखते हैं आप एंड आप श्योर हो जाता है कि यही वो कहानी मुझे जो जिसके आधार पर मुझे फिल्म बनानी है. So then you really live that story for a long time. You live with those characters for a long time, and if you're writing with someone, then you know you're constantly having that conversation about what can you do to make it better. So उसमें उस स्टोरी में उस कॉन्टेक्स्ट को, उस कैरेक्टर्स को कॉन्टेक्स्ट में रख के कितनी ऑनेस्टी हम ये उस स्क्रिप्ट में ला सकते हैं. तो वही I think every filmmaker, that's what that filmmaker does, that you know within that world of that story, those characters, how can we make it as lived in, as real as possible. And once that is there on paper, then you know of course it's the job of actors to bring that to life. And then in the staging of it, in the shooting of it, again you're taking it one step further and seeing that okay, now on paper it was like this, now when I'm shooting it, how can I take it up, how can I elevate it, and how can I make it more affecting and more how can I find ways to connect more to the audience. So it's like a constant ongoing process. So I think it keeps evolving. So ऐसा there's no fixed formula कि ऐसा करने से emotion आ जाएगा, ऐसा करने से there are no fixed formula. It's a constantly evolving process. ऐसी कोई स्टोरी है जो आपने बहुत पहले से लिख के रखी है, तो और क्या कुछ स्टोरी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपने वो स्टोरी जो लिखी है उसमें कौन से एक्टर्स को आपने ऑलरेडी सोच रखा है कि ये अगर अप्रोच होता है कोई प्रोडक्शन में मेरी स्टोरी तो मैं यही एक्टर को कास्ट करूँगा, ऐसा कोई है? ऐसी एक नहीं है, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो बंद पड़ी हुई है ऐसा कब से यू नो. एंड क्या होता है कि ना, पहले जब मैं नया इंडस्ट्री में आया था, तो जब मैं लोगों से मिलने जाता था, एक्टर से मिलने जाता था, प्रोड्यूसर से मिलने जाता था, तो मैं यहाँ एक कहानी लेके मैं जाता था कि ये कहानी है, मुझे ये बनानी है. फिर मुझे बहुत सालों बाद मुझे वो चीज़ चमका कि इफ़ दे डोंट लाइक दैट स्टोरी,
then that's it. That's my opportunity. That's Yeah. gone. So then I realized it's always better to go with multiple options. So then I started working on multiple stories. So I have a lot of stories of mine which I'm hoping I get a chance to make. So I keep pitching them to different production houses, producers, actors, and I really see which one will kind of take shape. If suddenly some actor gets excited by it, then maybe some producer is not excited by it. You know what I mean? And vice versa. Some producer is excited by it, then I don't have an actor for it. So a lot of things have to come into play, and a lot of things have to come together for a film to happen. ऐसा कोई एक्टर है जो आप चाहते हो कि हाँ मुझे इनके साथ काम करना है इन भाई फ्यूचर? कितने सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, जिनसे मैं मिलता हूँ, बात करता हूँ, लेकिन कभी कुछ होता नहीं है. तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं. आपने बताया कि आपको बचपन से ही शौक था कि आपको एक डायरेक्टर बनना है जी. और आपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी ऑलरेडी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी. तो ऐसे सबसे पहली फिल्म आपने कौन सी देखी थी जो आपको ऐसे लगा कि हाँ मुझे डायरेक्टर बनना है, और कौन सी फिल्म की डायरेक्शन आपको बहुत अच्छी लगी थी? आई थिंक बचपन से ही मैं आई बीन अ ह्यूज फिल्म बफ, सो आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज. सो ऐसा नहीं है कि कोई एक फिल्म देख के मुझे लगा कि हाँ मुझे डायरेक्टर बनना है. आई थिंक बिकॉज आई यूज्ड टू वॉच सो मेनी मूवीज, आई न्यू दैट मूवीज आर समथिंग दैट हैज़ माई हार्ट. It's something that I'm very passionate about. I never knew at that point that I will end up making movies, but it was a medium that it was my favorite pastime, my favorite hobby, and it was my go-to for every break or holiday that I got. So my mom was a film buff too. She used to watch a lot of movies, and she knew that I love watching movies. So she used to kind of give me options of like whenever there was like a school camping trip, and when you had to go out for a couple of days, she said that because she was so protective of me, she's like, I'll let you watch 10 movies, don't go. So I'll be like, I used to barter with her, like I'll say no, I want 15, and she's like, okay, fine. So then I used to do the deal and not go for camping. So I never went for any camps, trips, because I would just sit at home and watch movies instead. So that's how I that's how obsessed I was with watching movies. So मॉम के साथ ही डील कर लिया? हाँ, डील कर लिया. तो and my mom was very happy कि ठीक है बच्चा घर पे ही है, बैठ के पिक्चर देखना, कोई बात नहीं. So I think that interest that I had in movies never faded, never went away, and I'm glad that I found an outlet and ended up in an industry where I'm given an opportunity and I'm allowed to make movies now. So that's a good thing, I guess. ऐसी कोई एक फिल्म है, नेम वन मूवी जो आपने कहीं बार देखा जस्ट बिकॉज उसकी डायरेक्शन आपको अट्रैक्ट कर गई? ऐसे एक फिल्म मेकर को आप ये सवाल कभी नहीं पूछ सकते, बिकॉज ए फिल्म मेकर विल ऑलवेज हैव मेनी मूवीज लाइक दैट जिनको हम बार बार देखते रहते हैं, बिकॉज there are so many films that have inspired you, and you look at them almost like a textbook, that you look at it like you want to learn. So there are many movies like that तो ऐसा एक मैं बिल्कुल नहीं सिंगल आउट नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारे. Okay, and also what first made you fall in love with storytelling? So again, when I used to watch movies as a kid, I used to watch movies. I used to go and narrate the movies to people who have not seen the movie. Oh. So I think that was my first narration practice, because I used to narrate and मैं अपना ही खुद का मसाला सब डाल के narrate करता था, and I used to hype up certain scenes, and जो फिल्म में नहीं था but मैं करता था just to see the reaction of people. So I think my storytelling practice happened then. That's how I got into it. Okay, did you always know you wanted to be a director only? I always knew that I wanted to be I wanted to be able to tell stories. So ऐसा नहीं था कि I want to be a director. When I started off, I had no training. I still don't have any training in filmmaking. So when I started off, I didn't know. I thought maybe I'll just be a story writer, or maybe I'll just be a screenplay writer. Maybe I'll become a producer. I didn't know that I will eventually become a director. Okay, how did success change your approach to filmmaking? It has not really changed my approach to filmmaking. I think stories, the whole idea that I get opportunities to tell stories. I think despite my film not doing well, I'm still getting calls, and there is some kind of relevance attached, because of which I'm able to tell more stories. I'm very grateful for that. I'm extremely grateful for that, and I think that's a big success, that 15 years down the line I'm still able to tell stories despite not having like blockbuster success. मैं success बोल भी नहीं पाता हूँ. But I think for me that's success. So I'm hoping that little success that I have,
I can hold on to that and I can continue telling more stories. Okay. Do you design visuals first or emotions first? I can't. You can't design emotions. You can't design. It's all there on paper. So there is a certain feeling you're going for when you're writing, and you're kind of aiming to reach there when you're going to make the film. And sometimes you come very close to it. Sometimes you're very far away from it. So the attempt is always to come as close as possible to it, and very rarely it goes beyond. So you chase that constantly, and the visual part of it that happens during the prep and the execution. When you're prepping to tell your story, you start designing certain sequences, you start designing of how you're looking at it visually, what you want to do with it. And of course, you have interesting collaborators, like your cinematographers and editors, who come along and try and guide you with it and try and help you, and sometimes come and give you a completely radical idea which you must have not thought of, and that just lifts up. So it's again, I go back to it that it's a collaborative thing. Okay. Which project challenged you the most emotionally? I would like to say David, Tesh, and I did a Tamil short film called Edri. So these three were quite emotionally charged subjects, so they really challenged me because I was trying to kind of very stories very close to my heart. So I guess I was really trying my best to what was in my heart, trying to put that out there. So it was almost like very therapeutic for me to try and do those stories, but it really challenged me a lot. Okay. What scares Bijoy Nambiar the most as a filmmaker? What scares? Complacency. I get really scared by complacency. When I say complacency, that the moment I feel I'll get comfortable doing certain things, that it becomes almost second nature to do things a certain way. I think that, and you don't even realize it. You tend to do things and you think that's the right way to do it without even questioning it, challenging it. That's really scary, and you don't realize it, and you realize it only after it's done, and then you realize, oh shit, I didn't even go the other way. I didn't even try something. So, okay. Was there a specific filmmaker or film that you decided, I want to tell stories like this? Again, you can't ask a question like this to a filmmaker. There's so many filmmakers, so many films. I've grown up watching some masters, so those masters films have really influenced me as a filmmaker. Padmarajan, Mani Ratnam, Ritik Ghatak, Satyajit Ray, Adul Gopalakrishnan, and from the West, so many again, David Fincher, Steven Spielberg, Wim Wenders. So there are so many filmmakers whose films you have watched, and they really impacted you and influenced you and wanted you to tell stories. So there are too many films and too many filmmakers. Okay. Beyond filmmaking, we also love to talk about the person behind the camera. Okay. Tell us something about the person who's behind the cameras. Other cast and behind me or behind the person. I like to keep that aspect of myself as far away as possible from the media. I mean, before the interview started, you asked me if I have a personal PR, and I mean, that should just tell you the fact that I don't have a personal PR, and the fact that I don't choose to talk about myself other than the filmmaker and my films that I'm doing. I would always still keep it to that. I think my work deserves the attention, and my work as a filmmaker deserves the attention, not me. Okay, let's talk about your evaluation as a filmmaker. Yeah, my evaluation of myself. Yep. It's a constantly evolving. I feel I'm constantly evolving, and I hope I continue to evolve as a filmmaker. And again, don't get complacent, don't get stuck doing the same things. आपने OTT भी किया है, now films भी किया है आपने, तो वो ब्लॉकबस्टर का प्रेशर आप पे होता है? ब्लॉकबस्टर का प्रेशर नहीं होता है, या फिर बॉक्स ऑफिस का प्रेशर बोल दो. बॉक्स ऑफिस का प्रेशर, अगर थिएटर क्लब कर रहे हैं तो बॉक्स ऑफिस प्रेशर ऑटोमेटिकली आ जाता है. सो that's a pressure you cannot avoid, because ultimately if a producer is backing you with conviction, you want the producer to make good, you want them to recover, you want them to make good money, because that will automatically liberate you and give you the freedom to do bigger, better things. So वो pressure तो हमेशा रहता है. We'll have a quick rapid fire. अरे बाप रे. One word to describe your filmmaking style. One word to describe my filmmaking style.
Hardcore. Oh. A film you wish you had directed. Innale by Padmaraj. Okay. Favorite director all of time. Of all time, Mani sir. Mani Ratnam. One project that changed you as a person. Desh. Crime thriller or emotional drama? What would you choose? Emotional drama. Do dark stories choose you or you choose dark stories? Both ways. Happens both ways. दोनों होता है. I choose them and they choose me also. One film of yours that deserves more love. Desh. One scene you wish you could shoot again. Oh, there are too many scenes when I sometimes look back and I feel I wish I could shoot again. तो ऐसा एक सीन नहीं है. बहुत सारा. कोई एक शेयर करना चाहेंगे आप? सोचना पड़ेगा. Toyama has this night sequence where they're spending the night while the crocodile is right there, and there's a song that comes, Chandni. And when I was narrating the sequence to both Adarsh and Shania, I told them that we need to show a time lapse. We need to show that you're waiting. I thought of a couple of things, and one of them was a sequence where Adarsh is wearing a sweatshirt throughout the thing. So in the night they feel kind of cold and wet, so he removes a sweatshirt and he gives it to her, and she's all wrapped up, and then he's freezing. So then she takes off the sweatshirt and she puts one hand in one sleeve and he puts one hand in another sleeve, and they both share the sweatshirt. I thought that was a very cute moment, and I really wanted to shoot that. We couldn't shoot it because of we didn't have the time. And even there's a sequence, in the same sequence there is a thing that falls. There's a big ladder. No, not ladder. The signage. Okay. That falls on top of the. Okay. The hotel name. Hotel name. Yeah. Which is Konkan Bay Marine. Falls. So that falls. तो वो falling का हमने coverage बराबर नहीं लिया था. Just fell. पूरा नहीं गिरा था ऐसा. नहीं गिर गया था, but गिरने का इनका reaction नहीं लिया. इससे back shot है, reaction नहीं है. Again, didn't have the time to shoot it. तो ये सब मैं वापस, क्योंकि ये भी fresh है ना, याद है. Correct. We glad you corrected this because फिर लोग यही बोलते कि यार ये director ने ऐसे क्यों किया है. Glad ये correction हुआ. Okay. बहुत लोगों पता नहीं, मैं सोचा पकड़ लेंगे, but कोंकण बे मरीन जो है होटल का नाम है, वो that is inspired by खून बरी मांग, so it's KBM, so that KBM is from that. Okay. A genre you haven't explored yet but secretly want to try. Out and out comedy. Oh. I never done, so I would love to do. मैंने कोशिश किया था एक section में in David, but एक full blown comedy I've never done. I would love to do at some point. As a director, actor में कौन सी एक quality आप सबसे पहले notice करते हो? The emotional investment that actors bring to the table. That's the first thing I look for when I'm working with an actor. Of how are they reading the material, how are they looking at it, and what are they bringing to the table. So that's something I always look for. ये चीज़ attract करती है. बहुत ज़्यादा. Okay, before ending this conversation, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके upcoming projects को लेकर कि क्या कुछ projects. Yes, projects. Projects होते बहुत सारे. या फिर project है अभी कोई lined up? Lined up तो काफी सारे हैं, but lock कुछ नहीं हुआ है. So I'm still figuring out which one will actually go on the floors. So let's see. But before all that, I'm actually going to assist Mani sir on his next film. So that's what will happen first. But meanwhile, let's see. Thank you so much. It was a lovely conversation with you. Thank you so much. I hope I didn't ramble on too much. No, not at all. got to know more about the directing part because हमें तो यही लगता था cut action और देखो कि कैसे चल रहा है पूरा. स्क्रीन होती है आई थिंक बाजू में मॉनिटर, वहाँ पे चेक करते हो उसके पीछे का जो पूरा स्ट्रगल है दैट वी डोंट नो एंड वी एक्चुअली वांटेड टू नो दैट, इसलिए आपसे जानना था वो. थैंक यू सो मच.